राम लखन, कर्मा, त्रिमूर्ति, ताल और युवराज जैसी सफल फिल्मों में जोड़ीदार रहे डायरेक्टर और एक्टर के रूप में सुभाष घई और अनिल कपूर, जो काफी अरसे बाद एक मंच पर साथ नजर आए। अवसर था सुभाष घई की नए कलाकारों वाली फिल्म लव एक्सप्रेस के म्यूजिक लॉन्च समारोह का। निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने अपने बैनर मुख्तार सर्चलाइट फिल्म्स के तले नई फिल्म लव एक्सप्रेस का म्यूजिक लॉन्च अपने पुराने और अजीज दोस्त अनिल कपूर के हाथों करवाया। इस मौके पर सुभाष घई ने अनिल कपूर से जुड़ी पुरानी यादगार किस्सों को शेयर किया। In 1982, my acting teacher, Mr. Roshan Taneja, called me to be the examiner of acting class, and I had to go there because I was making Vidhata, and he was my teacher. It's a very interesting story which I'm sharing with you. And I went to the class as an examiner. Boys were performing, girls were performing, and then there was a boy who came in, and I thought, this boy I have seen somewhere. And I remember that he was on the set of Kohli. He used to come in with a thin boy, So what is he doing in an acting course? He seems to be too determined about it, without having much of personality, much of great face that time. And what he did while performing, he picked up certain lights, some disco lights, and which he is not supposed to in acting class. And he ornamented the whole atmosphere and starts dancing on the song very passionately. And so passionately that his whole body and face starts screaming, I want to be natural, I want to be natural. And trust me, I was so impressed by his performance that I gave him first class first. And his name was Anil Kapoor. I want to be an actor, I want to be an actor, I want to be. So the passion was right from the beginning an actor. I could see that. And I remember Anil Kapoor meeting me again during the time of Meri Jaan. And Meri Jaan, I conceived, we wrote, we wanted to direct, and we wanted to do a new boy kind of thing. But we wanted a good actor because that script was written for Amitabh Bachchan by Salim Javed at the time. And I said, well, I know Javed Sahab, a very dedicated actor I could see. Whenever I meet her, he charges me, and his name is Anil Kapoor. He agreed immediately, yeah, he is a very promising actor. We called him and we signed him, and I showed him before signing the big this advertisement in the screen. There he came to know that he had been signed, and he was shocked to see his own poster on the screen paper that time. And to my surprise, within 1 week he married to Sunita because he was waiting for that poster. And since then he has been my great friend, my family to me. I know stars change. I know ऊपर के stars नहीं होते तो नीचे नीचे होते हैं, and life is stars around, you see. But few people don't change. The sense of gratitude, the sense of giving is so strong. There's Jackie, there's so many people that with me. And one of the best friends of mine, and really close to my heart and mind, is always Anil Kapoor. And we have watched 6 films after that. 6 films. In every film he has excelled himself. Whether it was a Taal, or a Ram Lakhan, or a Karma, or a Yuvraj, he has done a fantastic job. And I just told you last night, I said, would you like to introduce new talent? He said, yes sir. Still you call me yes sir. And he is here, Anil Kapoor. इस मौके पर मौजूद सुभाष घई ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ऋतुपर्णा घोष की बंगाली फिल्म के बारे में बताया कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हम इस फिल्म को हिंदी में बना रहे हैं। बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरी ऋतु जी से कल रात को भी बात हुई है, ये बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि कश्मकश का नौका डूबी का हिंदी में बनाना कश्मकश के रूप में और बंगाली में नौका डूबी, ये हम दोनों का एक आपस में सहमति है। मैंने ऋतुपर्णा घोष से परमिशन ली, मैंने उनका कंसेंट लिया कि क्या हम इसको हिंदी में बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा देखो सुभाष, मुझे हिंदी की समझ तो नहीं है, तो तुम जो बनाना चाहो तुम बना लो, मैं इसको बंगाल में अपने तरीके से बना के पेश करूँगा, और जो तुम हिंदी में करना चाह सकते हो तुम कर लो। मैं बोला मैं इसको गाने चेंज करना चाहता हूँ। फिर हम लोगों ने गुलजार साहब को सेंड किया, ये म्यूज़िक हमने ऋतुपर्णा घोष को भेजा, उनको बहुत पसंद आया, तो
कोई ऐसी डिसऑनर वाली बात नहीं है। ये है कि उनका जो कहना है, शायद मिस इंटरप्रेट किया कि ओरिजिनली उन्होंने बंगाली फिल्म बनाई, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि भाई बंगाली फिल्म जो है वो बाकी ऑडियंस को भी देखने को मिले, तो उसमें सिर्फ भाषा चेंज करनी है और संगीत बदलना है, और हमने किया और फिल्म कश्मकश ना। फिल्म लव एक्सप्रेस में सभी नए कलाकार हैं, एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर भी। यह फिल्म मई में रिलीज होगी। म्यूजिक लॉन्च समारोह में मौजूद अनिल कपूर और सुभाष घई ने नए टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म देने की बात कही। यह बात सही है कि नए टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। खुशी है कि जब आज मुक्ता आर्ट्स नए सितारों को पेश कर रही है, नए टैलेंट को आपके सामने ला रही है, उस वक्त मीडिया का प्रोत्साहन देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि आपने इतनी तादाद में आए और न्यू कमर को एक्नॉलेज किया। 2011 इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, आई थिंक, जहाँ पर कि फ्लड ऑफ न्यू टैलेंट्स विल बी देयर, जो कि आगे आने वाले 4-5 साल में बहुत बड़े स्टार होंगे। लेकिन यह सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के किस्मत में नहीं होता है, सिर्फ सुभाष घई की किस्मत में है, क्योंकि सुभाष घई ने खुद का अपना एक्टिंग स्कूल भी खोल रखा है। Subhash has always been one of those filmmakers who's always not only encouraged and introduced new actors and actresses, but even all the technicians, and as well as he's been he has his contribution in Hindi film music has been immense and tremendous. So he's always been a kind of a source of an inspiration for all of us, and and what I admire about him is, more than anything else, is of course he's made some fabulous films, and he's, I'm sure, in the future also going to make fabulous films. But what I appreciate is his enthusiasm, his commitment, his passion towards still going on and on and on, and having these kind of events and functions, where he gives a platform to for the newcomers to meet the media like you all and get an opportunity to have a certain kind of exposure. And then of course his what he has done with his institute. Now this is a model which is a revenue model which has completely there's no money in it. He's going to lose money in it constantly. Like everybody else is making all kinds of investments in property and studios and all, and here he's done something on for education. So that's one of the reasons I'm here today, and I always would be there whenever Subhaji does something like that. And I remember Mahesh Bhatt saying something like that. He said, where did he get that energy again and again, year after year? He does these Maurats and these events and and these kind of functions, and he goes on and on. And you need a certain kind of, he's you can say he's thick skin. He just doesn't, that's what it is. And for any person who has, for him to achieve what he has achieved, you have to be thick skinned. You have to be completely committed, and no matter what people say about him. अब देखना सुभाष घई की एक्टिंग स्कूल के ये कलाकार इस फिल्म को कितना सक्सेस बना पाते हैं। कैमरामैन सादाब शेख के साथ संजीवनी शर्मा की रिपोर्ट, MNS मीडिया न्यूज सर्विस, मुंबई।